Alternative hypothesis. Null hypothesis is denoted by the symbol H naught, whereas alternative hypothesis is denoted by the symbol H1. Null hypothesis is written with a equal sign, and alternative hypothesis is written against the equal sign. So this is what we discussed in the last lecture. Today, again we focus on these notations. Notations are very important because when you are attempting the questions, you have to follow the mathematical formats. So this one is the mathematical way of writing the hypothesis. Null hypothesis is denoted by H naught, so we label it by H naught. And then we say again that the population mean is equals to some value. So some value is mu naught in general. And then against the null hypothesis, three alternatives exist. Against the equal sign, three signs exist. This is what again we discussed, that mu is greater than mu naught, that the sample mean is more than the population mean. One more H1 we said that mu is less than mu naught and not equal. So three alternatives exist against the null hypothesis, against the equal sign. There is a greater than, less than, and not equal. Not equal. So as far as your problems are concerned, we will be attempting the problems within 5 steps. Within the first step, we define the null, and alternative hypothesis. Null and alternative hypothesis. इस स्लाइड नजर आ रही है? हाँ बाबा माइक खोलें, स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। जी स्लाइड। First step goes to define the null and alternate hypothesis. Null hypothesis is for population concerns and alternative hypothesis for the sample concerns. So overall, within the statement, sample information is given to you people as well as the population information. Population mean given and sample mean is given. So what we do, if you recall, we say that the average weight of cement bag is 50 kg. So it's simply a statement. That statement is written within the format as a null hypothesis, that the population covers the weight 50 kg. So we will be writing the 50 kg. And then we will be writing the alternative. Alternative hypothesis goes against the null hypothesis. There the sample mean, if the sample mean is going to be exactly 50, then no need to test further. So let's say the sample mean is more than 50, so we say it's a greater than 50. This one is the first step, where you write the null and alternative hypothesis. Within the second step, you will be writing the level of significance alpha. Sometimes alpha is given to you people, and sometimes you set on the assumption side. All the times assumption is taken 5%. This is what we did. That level of significance is somewhat error.
Within the third step, because you are doing the decision making, so for decision making, you need a rule on which you carry the decision. So their rule is defined in the third step, and we call it critical region. Within the third step, you will be defining the rule, and that rule is a critical region, where you accept your decisions and where you reject your decisions. So that we call it critical region. Now, as we said, that of course three alternatives exist as a greater than, less than, not equal. But as far as problems concerned, you follow only one. Out of one is to be written, not at the same time it's greater than, less than, or not equal. So one time one is written, and I said that not equal is preferable, write greater than and less than unless you are asked that use the alternative hypothesis with a greater than sign or less than sign. But if nothing is there, hidden question is there, you prefer to go with the not equal sign. So within the third step, you are defining the critical region. If 5% is there, and the critical region is formatted by considering the alternative hypothesis. Alternative hypothesis goes with a greater than sign. So greater than sign, you mean that इसके लिए क्या कहोगे, एरर किस तरफ होगी? अगर 5% is the level of significance, alpha is a 5%, and is a greater than 50, then error goes to average weight is a 50, and is a greater than. So where the error goes? Error goes to the right side. This is what we did. राइट साइड क्यों? Okay, got it? क्यों राइट साइड क्यों? Right side. सर राइट साइड क्यों? जी बाबा, जी। अगर ये लेस देन में लिखता तो एरर इस तरफ होती, अगर नॉट इक्वल लिखता तो एरर होती इस तरफ. तो इसको आप लिखते हो केटी के रीजन. केटी के रीजन में this one, because this one is a z-axis or x-axis. So now it's at present it's a z-axis, so we call it z-axis, and we draw a line. All the times decision is made on the basis of lines. You need a decision line. So here, from here to here is a safe zone. If z is this z covers the mean 0. Whatever the mean is there, that is to 0. Now, if the z is 1.2, how much 5% level of significance? We define a table. At 5% level of significance, we have 1.645. So it's 1.64. Now, this one is a safe region. So where you reject, you will be rejecting. This one is a rule, decision making rule. And here we say that reject the null hypothesis if the test value you are going to test z is greater than 1.64. Now try to understand. Let's suppose a university has set a rule that you need 50%, 50 marks for passing the subject. So 850 dividing line is made. This one is a decision rule. If you are getting 40, you are declared failed.
If you are getting 60, you are declared pass. So 60, 70, 80, this one is a safe zone, and here is a critical zone. Here you are in danger, and here you are a safe. So all the decisions are made on the basis of lines. They are known as decision lines. Now here, if Z is greater than 50, then we follow right tail test. For greater than, when you say null alternative hypothesis greater than sign, then we follow right tail test, because error is going to be falling on the right side. So it's a right tail test. Right tail test. Now let's suppose you carry here less than sign. Then for the less than sign, you draw a test which you call it left tail test. It is minus 1.64. It's a less than. If it is a not equal, then it's 1.96. So it's a greater than 9.6 and minus 1.96. And that is to be treated as a critical region. So here we accept, here we reject. Definitely we carry a test. Test is something in our university. What we do in test, we take the assignments, paper, assignment, each and everything, final paper, and final marks. If your marks are going to be less than the defined rule, that is a 50, you are declared as a fail. If your marks are more than 50, you are declared. So test is going to be the fourth step. For test, you need a formula. Z equals to x bar minus mu over sigma over under root n. All these values are given to you people. You will be picking the data from the question, and here some value terms. So within the fifth step, you carry the decision. So what we do, within the fourth step, we define a rule. Rule is defined in the critical region on the basis of 5%, 10%, 1%, whatever the question is given to you in terms alpha. And the decision line is made on the basis of alternative hypothesis. Is a greater than, then right side. If it is less than, left side. If it is not equal, then two tail test we follow. So here you follow right tail test. Here you follow left tail test. Left tail test, because error goes to the left side. Minus 1.64 is somewhere here. 5% is here. Its value is minus 1.64. So that test is known as a left tail, because tail is falling to the left side. It's known as a left tail test. Left tail test. It's a left tail test. So here is the decision line. This one is a safe zone, and this one is a danger zone. So here you reject H naught if Z value, that is the test value, is less than minus 1.64. Now we come to the not equal. A not equal, you mean that half of the error goes one side and half of the error goes other side. So you follow two tail test. You follow two tail test. Half of the error means if alpha is 5%, then 2.5% area falls one side. There is a right side.
and 2.5% area falls to the left side, and that is again 2.5%. And we will be writing its a value from the table. Area is given, we use the reverse use of table. Area is given, and we will be looking the value. So it's a 1.96, and here is a minus 1.96. So here we reject. Here two critical regions are there. Within this area, you are safe. So reject. Here we write reject the test Z value. Reject H0. If Z value is greater than 1.96 or Z value is less than minus 1.96. Now listen one time more. We said hypothesis is simply an assumption. It's simply a statement. For the time being, we say that whatever manufacturer claim is there about the population, that is true. Then we said that there are two types of hypothesis. One is known as null hypothesis, and other is known as an alternative hypothesis. Null hypothesis is drawn from the population figures, and alternative hypothesis drawn from the sample figures. Null hypothesis is denoted by H0, and alternative hypothesis is denoted by H1. Null hypothesis is denoted with equal sign, and alternative hypothesis is written with greater than, less than, or not equal. So three alternatives exist against the null hypothesis. Against the equal sign, three signs exist. That is greater than, less than, and not equal. Within 5 steps, the solution procedure completes. Within the first step, we define the null and alternative hypothesis. Within the second step, you define the level of significance. Then you call it alpha. Within the third step, you define the rule. Then you call it critical region. On the basis of that rule, you will be deciding whether to accept the null hypothesis or to reject it. Because in hypothesis testing, the rejection and acceptance is not to be made unless certain tests are to be performed. On the basis of those tests, we accept or reject. At the start, we set an assumption. And that assumption's truth or falsity is never known with certainty unless the test is performed. So the test is performed by the formula that is Z equals to x bar minus mu over sigma over n. The whole task within the hypothesis testing is the decision making. We will be making a decision about the claim which is being made from the manufacturer. Whatever the claim is made for the population, that claim is to be tested. What we do? We draw a sample and we take a sample's mean. If the sample's mean is going to be exactly same as population mean, is the average weight of a semen bag is 50 kg, and if the test goes the value 50, when you simplify Z equals to x bar minus mu over sigma over under root n, then if it is 50, then we say nothing is wrong, each and everything is fair, so machine is working properly, that needs no more repair. That is your decision. Decision is made on the decision line. On the basis of the decision line, one side is the safe zone. So here is a safe zone. So here we accept H0. Here is a critical zone. So here we reject
H naught. Okay, now turn on your mic, please. Turn on. Hurry up. Mic जी खोलें. सर. बताएं, समझ में आ गई चीजें? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन. अब ये सवाल की तरफ जाते हैं तो और अच्छे से होगा. समझ में आई है वैसे चीज़ें. चलो, एक प्रॉब्लम करें तो फिर आपको चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. ओके. जी फॉर श्योर सर. चलो, अब ये क्या है कि meat packing machine is supposed to put 8 ounces of meat in a container. थोड़ी statement को पढ़िएगा. The packing machine operates with a standard deviation of 0.2 ounces. An inspector for the company checks the machine to see if it is performing properly by taking a random sample of 49 containers and found the sample mean 7.95 ounces. Would he call for repairing the machine? अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको इसकी नल हाइपोथेसिस लिखनी हो तो क्या लिखोगे? जी. For this statement, then what you say about the null hypothesis? सर वो जो इसका एक्चुअल है. हेलो. जी 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 जी. 8 आउंसेस. हाँ, वो मुझे नोटेशन में बताओ ना. क्या लिखूं? म्यू म्यू फिर इक्वल्स टू 8 आउंस. 8. बाबा क्या है कि मशीन की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये नहीं है कि किसी डब्बे में 8 आउंसेस पोर मीट करे और किसी डब्बे में 9, किसी डब्बे में 10. नो, machine is its task is defined. Machine task is supposed to put 8 ounces of meat in a container. So the whole product is to be picked with a weight of 8 ounces. Okay, you got it? बिल्कुल. ये पूरी पॉपुलेशन के लिए कहानी होगी, पूरी प्रोडक्ट के लिए कहानी होगी जो आप नल हाइपोथेसिस में लिखोगे. सही आपने लिखा. इसकी अल्टरनेटिव कहां से लिखोगे? अल्टरनेटिव पहले स्टेप में तो ये लिखना है ना कि नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको लिखना है. ठीक है भाई. अल्टरनेटिव कहां से लिखें? अल्टरनेटिव आपने सैंपल के लिए बताया था सर ना. हाँ हाँ, कितना? तो वो सर अपना वो है 7.95 आउंसेस. तो इससे ग्रेटर देन है, लेस देन है या नॉट इक्वल है? लेस देन है सर. लेस देन है. तो बाबा इसमें आप दो लगा सकते हो, नॉट इक्वल भी लगा सकते हो, लेस देन भी लगा सकते हो. ठीक है. जी जी. मैं ये कहता हूं कि आप नॉट इक्वल लिखा करें. क्यों? कि नॉट इक्वल में आप सेफ हैं. अगर ग्रेटर देन होगा फिर भी आप एड लगाओगे, और अगर लेस देन होगा फिर भी आप एड लगाओगे. ठीक है. क्लियर? क्लियर हो गया पहला स्टेप? जी जी सर. सर अच्छा आपने इसकी तमहीद जो बांधी थी हाइपोथेसिस बनाने के लिए वो आप क्या कह रहे थे. आप हाइपोथेसिस भी देखें उसका. थोड़ा फिर बोले, थोड़ा समझ में नहीं आई आपकी आवाज. जी आप बोले. सर जी आपने इस स्टडी के लिए या ये जो रिजल्ट्स हैं इनको आपने कहा था कि हाइपोथेसिस है मतलब ये ना. जी. ये आपने क्या तमहीद बांधी थी थोड़ा सा मतलब 2 सेंटेंस में वो बता दीजिए कि ये हाँ जो हाँ, दूसरा अभी वाला. अभी वो कर, अभी वो मैं आपको दिखा वो चीजें. पहले आप इस प्रॉब्लम से जान छोड़ा है, वो डिस्कशन करते हैं, अभी वो रहती है. अभी फिर वो रिपीट करते हैं. पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये स्टेप क्लियर हो गया आपका पहला? जी जी सर. अरे यार, वो तो आप बोल रहे हो, दूसरे कहाँ हैं? जी. बाबा ये इनके समझ में चाहिए तो लो. जी जी सर. ठीक है बाबा, क्लियर?
हे थी यो पहिरियों स्टेप। हाणे बाबा ॿियो ॿुधायो त within the second step we will be defining the level of significance. Now within this step, within this statement, what is the level of significance? Alpha. सर आपने कहा था How much the value to assign alpha? हाँ बाबा आपने मुझे 5% ले लो। क्यों क्यों आपने कहा था। नहीं मैंने कहा था पेपर में लिखोगे कि ये सर ने कहा है बाबा उसके लिए कुछ रीजनिंग लिखोगे ना हाईएस्ट लेवल लेते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ जी जी क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ लेते हैं 95 तो 5% हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 100% होती है पूरी एरर इससे थोड़ी लिखोगे हाईएस्ट एरर नहीं ये बाबा 5% तो लेते हो लेकिन इसके भी पीछे कोई रीजनिंग तो होगी ना क्यों लेते हो 5%? बाबा जब डेटा में कोई चीज मिसिंग होगी तो आप अजम्पशंस लोगे। अब प्रॉब्लम तो आपको करना है ना तो वो आपको वैल्यू अरेंज करनी पड़ेगी उसको आप कहते हो अजम्पशन। जो मिसिंग डेटा होगी उसको बैलेंस करने के लिए उसको लिखने के लिए अज्यूम करके कहीं से लेके और उसको रखोगे। ठीक है ये अजम्पशन है। डेटा में कहीं लिखा हुआ है क्या 5% है? Would he call for repairing the machine at 5% level of significance? इससे तो नहीं लिखा ना इसने ये assumption है 5%। assumption भी आपने 5% की सर। ठीक है चलें सही। assumption सर आपने 5% की ली। हाँ अब फिर पूछेगा कि भाई 5% क्यों 10% क्यों नहीं 1% क्यों नहीं 5% क्यों लेते हो? अब सुनो स्टैंडर्ड्स चलते हैं 3। एक स्टैंडर्ड है 1%, एक स्टैंडर्ड है 5% अल्फा और एक स्टैंडर्ड है 10%। ठीक है 1% की माना है 99% कॉन्फिडेंट, 5% के लिए आपको 95% कॉन्फिडेंस लेवल है रिक्वायर्ड और 10% के लिए आपको है 90% कॉन्फिडेंस लेवल। नाउ when your customer and you are getting the product at 1% level of significance from the dealer, then you are on safe side because only one atom may be defective. If 2 or 3 then you can reject it, you can return it. So at 1% level of significance the customer is on benefit side but the dealer is on little bit loss side. Whereas at 10% level of significance the customer is on little bit, if you compare, the customer is little bit on loss side because even if 10 atoms are not working, even then he have to keep the slot. If more than 10 atoms are defective, then you can return. But as far as the dealer concerns, so dealer is on safe side here in 10%. Here, when alpha is 1%, then dealer is little bit in trouble. Here, dealer is comfortable. So in market, the middle one, that is 5% level of significance, is acceptable by the dealer side as well as for the customer side. So they agree that whenever assumptions can be taken at 10%, assumption can be taken at 1%. You can do it, but some standards for carrying the assumptions are set again. That is 5%. So it is stated that whenever you are performing this level, that all the times to be performed at 5%. Okay, you got it? Mic खोलें, clear? जी सर। थर्ड हिस्से में क्या करें? थर्ड हिस्से में इसकी रूल बनाएं, रूल लिखें कि कहीं स्टेप करोगे कहीं रिजेक्ट करोगे।
केडी के रीजन, इसे कहते हो केडी के रीजन। एक डिसीजन रूल बना कर रखते हैं कि अपने डिसीजन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसके लिए एक डिसीजन रूल बनाना है। अब जब ये 5% है तो केडी के रीजन इज बेस्ड on alpha because alpha is 5% and it's not equal. For not equal, which test you follow? Either right tail or left tail or two tail. Which tail you follow? Which test you follow? Yes, please. two tail. Two tail. ठीक है बाबा? ये not equal है ना? So 5% level of significance. If 5% level of significance, then half of the error goes one side and half of the error goes the other side. So it's going to be 2.5% area one side, 2.5% area one side, and 2.5% area other side. टू 2.5% से 1.96 है ना? हाँ बाबा, इसको थोड़ा चेक कर लें। हाँ, इट्स 1.96। Okay, you got it? सॉल्यूशन का ठीक है जी जी स्टेटमेंट समझ में आ गई सर। जी, जी सर। स्टेटमेंट आ गई समझ में। बाबा डिसीजन रूल तो बना के रखे ना खुदा के बंदे, यही तो मुसीबत है। डिसीजन रूल ये है आपकी डिवाइडिंग लाइंस, ये है डिवाइडिंग लाइंस। इस जोन में 1.96 और -1.96 विद इन दिस रेंज वी एक्सेप्ट H0। ठीक है, और इफ द z वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.96 तो इससे आप रिजेक्ट करोगे, और z वैल्यू इज लेस देन -1.96 इससे रिजेक्ट करोगे। केटी की रीजन बन गई, ये है केटी की रीजन 1.96 और -1.96। here is a danger zone, here is a danger zone, here is a safe zone। बुक है आपके पास अभी? माइक खोले, बुक इज अवेलेबल? बाबा माइक खोले, आंसर माय क्वेश्चन। डू यू हैव बुक इन हैंड? जी सर। राइट नाउ, राइट नाउ। जी जी है सर, है। चले, अब बुक के फ्रंट पेज पे फिगर्स बनी हुई है, ये देखो फ्रंट पेज पे। बिल्कुल बंद करो बुक को, बाहर एक बुक के बाहर ये फिगर पड़ी हुई है ना, बुक पे पेस्टेड है, बुक पे टाइटल पेज पे ये फिगर नजर आ रही है। 3 फिगरें बनी हुई है ना बाबा? मिली? जी सर। बाबा ही जेके टे फिगरूं अथव, हिन में हिकिड़ी अथव राइट टेल टेस्ट, जंहिंमें एरर तव्हांजी राइट साइड ते पई आहे, इहा राइट टेल टेस्ट, हिनखे चओ था राइट टेल टेस्ट। ही त आहे डिसीजन मेकिंग, इट्स राइट
टेल टेस्ट राइट टेल टेस्ट में छा था कयो हिन रीजन में इट्स अ सेफ जोन ये रीजन हिते एक्सेप्ट इट्स नॉट हियर यू एक्सेप्ट इट्स नॉट जेकॾहिं हिन z जो वैल्यू ग्रेटर देन थी वञे 1.645 खां तो यू रिजेक्ट इट्स नॉट हिन खां नंढा हूंदा 1.64 खां त एक्सेप्ट अदरवाइज बि रिजेक्ट ओके अहिड़े ई नमूने वरी हीअ अथव लेफ्ट टेल टेस्ट लेफ्ट टेल टेस्ट अहिड़े ई नमूने ये अथव टू टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट इन लाइंस को कहते हो डिसीजन मेकिंग लाइंस these lines are known as decision making lines on the basis of these lines you accept or reject your hypothesis okay you got it जी 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 आगे बढ़े अब 3 स्टेप्स हो गए we defined the null hypothesis and then alternative within the second step we defined the null hypothesis within the third step अच्छा ये पेपर में होगा क्वेश्चन सिर्फ 5 लाइन आपको लिखनी है 5 लाइंस पे you will be awarding the marks ठीक है ये 3 तो हो गए स्टेप चौथे स्टेप में क्या करना है बताओ टेस्ट z की वैल्यू फाइंड करनी है अब टेस्ट जेका लगाइंदो वो लगाइंदो z इक्वल्स टू ये सागी दो जेका सेंट्रल लिमिट थ्योरम में पढ़ी आयो x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट n ठीक है आणि सजी कहानी हिते तव here is a trouble side here you are not sometimes you are not making the decision which one is a sigma which one is a s either to apply z either to apply t so this is very important try to understand these steps although you did that where you apply z where you apply t where you apply the second case when you replace if sigma is not given to you people and n is greater than 30 then you will be replacing sigma value from the s value sample system deviation is to be replaced as a population system deviation we are going to perform the same task as we did in the previous chapter for this chapter the tasks are the same over there you estimated the mean in terms interval and here you are declaring the hypothesis for the mean nothing else so things are the same okay now you tell me what is x bar is value of course is 7.95 है सर 7.95 so we will be placing here 7.95 what is mu 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 की वैल्यू क्या है 8 ठीक है अब इसमें डिसाइड करो कि सिग्मा गिवन है एस गिवन है या दोनों मिसिंग है सिग्मा की क्या वैल्यू है पहले तो सिग्मा है अगर नहीं है तो फिर ये है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ये है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ये है क्या
0.2 जो लिखा हुआ है ये है क्या नोटेशन में? व्हाट इज राइट? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। इस नोटेशन से मैं लिखूं बाबा, स्टैंडर्ड डेविएशन तो है, इसमें लिखा हुआ है तो विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.2, so everyone believes that 0.2 is the standard deviation. Okay, you got it? जी जी। But this standard deviation stands for which notation? Either it's a sigma, either it's a S, or some else. Yes, सिग्मा। सिग्मा, सिग्मा। ये सिग्मा है, क्यों क्यों? नहीं नहीं सर, ये एस है। हाँ, ये सर हम भूल जाते हैं अक्सर जो है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें जो है ना वो मतलब बाबा इससे होती है, ये पॉपुलेशन की किससे होती है। सुनो सुनो तो सही, इस पूरे प्रॉब्लम में यही चीज है टेस्ट वाली जिसको आप फोकस करना है, इन चीजों को आपको फोकस करना, ठीक है? चलो 0.2 को अभी हटके और जो बैठे हो वो मुझे बताओ बाबा। सर इस बार आप सिग्मा की और वो जो है ना मतलब एस में ये तो मुझे दूसरों से भी बात करने दो जी। बाबा 0.2 का अच्छा लिखा, लो 0.2 is the standard deviation. So by which notation I will be placing? I will be placing 0.2. 0.2 is what in terms notation? G. It's a very simple. It's not a hard task. To answer the Sigma. बाबा सिग्मा चौन है। हेलो बाबा, माइक खोलियो बाबा, नहीं सिग्मा चौन बाबा, माइक खोलियो, सिग्मा चौन है। जी जी सर। छो सिग्मा चौन ये सोन खबर तो ये सोन चौआ ये सी चौआ to see if it is performed properly by taking a random sample of ordinary containers. जेकॾहिं हिते ये इंफॉर्मेशन लिखियल हुजे हा न with the standard deviation of with the standard deviation of 0.2 ऐं हितां जेकॾहिं कटे छॾे हा क्या क्लियर वो हुई सैंपल सां रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुई त सैंपल जी मीन हेतिरी आहे ऐं हुन जी स्टैंडर्ड डेविएशन हेतिरी आहे। ये सैंपल सां रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुई ऐं हुनखे लिखूं आहे 0.2 एज ए एस, पोइ हिनखे एस लिखूं आहे। पर हीअ त मशीन जी स्पेसिफिकेशन आहे न, मशीन में टेक द एरर 0.2। ओके, यू गॉट इट? जी सर। ऐं साईं हिन जी जेका साइज़ आहे उहा आहे 49 कंटेनर्स। हिनखे डिवाइड कंदो 49 सां, हिनखे सिंप्लीफाई कंदो, हिनखे जॾहिं सिंप्लीफाई कंदो त हिन जी रिज़ल्ट थी अचे -1.75। ठीकु आहे, हे आहे न टेस्ट z equals to x bar minus mu over sigma over under root n। ये सब वैल्यू हिते रखिया, here we place the value। so असांजी वैल्यू जेका आहे ये ॾिसो ही कहिड़ी टेस्ट आहे लॻल हिन में, नॉट इक्वल जे करे कहिड़ी टेस्ट लॻाईंदो, कहिड़ी टेस्ट लॻाईंदो फॉर नॉट इक्वल केस? Two tail. Two tail test. जॾहिं टू टेल टेस्ट लॻाईंदो अल्फा घणी आहे 5%,
ये जॾहिं 5% आहे त टू टेल्ड में लिखंदो ये साईं लिखंदो 2.5% this side, half of the error one side, because two-tailed test is there. For two-tailed test, half error goes one side and half error goes other side. So it's again 2.5%. If area is given, then the point is to be located. That is the reverse use of table, and the value of Z is going to be 1.96, and here minus 1.96. This one is a safe zone. This one is a safe zone. These are known as the lines, decision making lines. ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन डिसीजन मेकिंग लाइन सीधी होती है. -1.75 इतने कितने होंदो ना. Am I right? This value on the number line. So what do you say? -1.75 is falling in the safe zone or critical zone. Where it was -1.75. सेफ जोन सर, सेफ The जोन. safe zone. So if it is falling in the safe zone, then you reject your hypothesis or you accept the hypothesis. रिजेक्ट, सॉरी एक्सेप्ट. जब भाई आप सेफ जोन में होगे डिपेंड करता है सर, उसने accept करोगे. स्टेटमेंट क्या कही है उसने, स्टेटमेंट क्या कही है उसने. अगर वो कहता है सुनो, कि इफ देयर इज अ नीड तो हम कर देंगे, नहीं भाई नो, रिजेक्ट कर दिया हमने उसको. 0 to सुनो, जब सेफ जोन में चीजें होगी तो आप एक्सेप्ट करोगे. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ना उसने मतलब कि किस तरह से सवाल पूछा. बाबा मेरी तो सुनो यार. जब सेफ जोन में आपकी वैल्यू फॉल कर रही होगी तो आप एक्सेप्ट करोगे टेस्ट की वैल्यू. ठीक है, और अगर सेफ जोन से हो सकता था ये वैल्यू जो थी ये आ जाती 2.68. ठीक है, तो 2.68 तो से केटी के रीजन में थी ना, तो यहाँ इसे आप रिजेक्ट करते. ओके, यू गॉट इट. और किसको एक्सेप्ट करती हो, किसको रिजेक्ट करती हो? जी सर. अल्टरनेटिव को या नल को? आप लोग डिसीजन जो ले रहे हो वो नल के लिए ले रहे हो या अल्टरनेटिव के लिए ले रहे हो डिसीजन? सर डिसीजन तो मैं अल्टरनेटिव के लिए लूंगा ना, नल तो हो रहा है. नहीं, अल्टरनेटिव यूज कर रहे हो लेकिन डिसीजन अच्छा, आप सही. डिसीजन आप जो हो नल के लिए ले रहे हैं. वो पूरी पॉपुलेशन के लिए ले रहे हो, सैंपल के बिल्कुल लिए सर. नहीं ले रहे. सही सैंपल सर, को सही. तो लेके और ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल यू आर आप परफॉर्मिंग चेक करते हो. decision making task is performed on the basis of sample. Okay. जी Okay. सर. So here we accept the null hypothesis. Why? Because it's value fast in the exception area. It is not. It is in between 0, 1, -1.96 and 1.96. Here, safe zone. So we accept the null hypothesis and we say machine is working properly. Nothing is wrong with the machine, and that needs no more repair. In 5% level of significance. Okay, you got it? जी सर. He problem jekwa जी. you sa panjan steps mein kehwa. Within the first step we define the null and alternative hypothesis. Second step mein level of significance. Third step mein we define critical region. एकड़ो rule define कयो. Fourth step में असां टेस्ट लगाई and fifth step में असां decision making. तो where we accept or reject. ठीक है, समझ में ॻाल्हियूं अची वियूं?
क्लियर? जी सर. चलो, आणि still we have tomorrow we have a class. So ये जेके lines